Hello students, welcome back to the second lecture of this chapter, circles. Now, in our first lecture, we have just seen how to find equations of circle. There were three different forms of equation of circle. The very first one was, yes, come on, equation of circle in standard form. The formula was x square plus y square is equals to a square, where a is the radius. And standard form का मतलब the center of the circle is at origin, right? The second one was center radius form. Center radius form कैसा होता है? Where the center of the circle is h, k, and then equation of the circle is given by the formula x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to r square. Okay. Diameter form. What was the diameter form? Diameter form में हमें diameter के end points पता होने चाहिए. तो जो diameter के end points है, उसके coordinates को हम नाम ले लेंगे x1 y1 and x2 y2. And what was the formula? The formula was x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. All right. Okay. So these are the formulas. Now let's continue with exercise 6.1. Now exercise 6.1 में जो second type के questions है हमारे वो है finding the center and the radius of the given circle. Now but obvious अगर हमें center और radius find करना है तो equation of the circle will be given to us. Okay. Now let's have a look at the first question. X square plus y square is equals to 25. Now when we look at the question, students, what do we understand? When we look at the equation of the circle, what do we understand? We understand that this x square plus y square is equal to 25. The equation of the circle, which is given is in the form of which form? It is a standard form. All right. So standard form के साथ compare करते हैं. So I'll say comparing with standard form. हमारा standard form क्या है? It is x square plus y square is equals to a square. So therefore we'll get a square is equals to 25. Therefore a is equals to 5, taking square root on both the sides. So hence we will say the radius of the circle is a is equals to 5. And what about the center? Standard form में मतलब the center is at origin. So we'll say center is 0, 0. That's it. So that's our final answer. All right. So now let's understand our next sum. Find the center and the radius of the circle. Same type 2. The question is that x minus 5 the whole square plus y minus 3 the whole square is equal to 20. When I say question, मतलब यहाँ पे equation. The equation of the circle given to us is x minus 5 the whole square plus y minus 3 the whole square is equal to 20. Now students, when we look at this sum or when we look at this equation, we understand that this is of the type of center radius form. So the given equation, once again I'll write it as x minus 5 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to 20. Now, comparing this equation, we will compare this with center
We'll compare this with center radius form. Now, do we remember our center radius form? Yes. It is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. All right. So, come on students, compare करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? Quickly. x minus h, यहाँ पे x minus 5 है. So we can say h is equals to 5. Similarly, यहाँ पे y minus k, यहाँ पे है y minus 3. So we can say k is equals to 3. And lastly, r square, यहाँ पे है 20. So we can say r square is equals to 20. So now we'll say from this we can say h is equals to 5, k is equals to 3, and r square is equals to 20. That is center. Let it be C. Okay. The center of the circle, let us be C, which is h comma k, will be equal to h is 5, a is 3. 5 comma 3. And radius. R square is equals to 20. So what is R equal to? R will be equal to under root of 20, which is equal to under root of 4 multiplied by 5. All right. So finally we can say therefore R is equals to 2 root 5. Center ये रहा. Radius is 2 root 5 units. Is this clear to all of us? This was finding the center and the radius of the circle when the equation is given. Now, पहला वाला जो फॉर्म था हमने देखा, it was in standard form. ये वाला जो है, it was in center radius form. Let us have a look at our next sum. Next, find the center and the radius of the circle. The given circle this time is x minus 1 upon 2 the whole square plus y plus 1 upon 3 the whole square is equals to 1 upon 36. Now this time we'll say once again comparing with, इस बार मैं डायरेक्टली लिखता हूं. Comparing with center, radius, form, and we'll write the formula. Comparing with center, radius, form, and the formula is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equals to r square. Now students, this time when we are comparing, तो अगर ध्यान से देखें तो h is equals to 1 upon 2 and k is equals to 1 upon 3. But यहाँ पे plus sign है. So I'll consider this as plus 1 upon 3. So basically अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, साइन अलग है, इसका मतलब k will be नेगेटिव. ठीक है, हम इसे इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं. If you want this, you can consider it this way. Y minus 1 upon 3 bracket close whole square. You can consider it this way. Y minus of minus 1 upon 3. All right. So कभी भी साइन अपोजिट आएगा, वो पर्टिकुलर h हो या k हो, उसे हम लोग नेगेटिव ले लेंगे. So now we will get therefore h is equals to 1 upon 2 and k is equals to minus 1 upon 3. R square will be equal to 1 upon 36. All right. So students, center, (1 upon 2) comma minus 1 upon 3 h comma k, right?
and radius will be equal to r. Radius will be equal to r, which will be equal to, taking square roots, 1 upon 36 square will be 1 upon 6 units. That's it. That's our answer. Alright. Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में. Our next type is finding the equation of the circle for the given condition by using center radius form. Okay, let us have a look at the question. Question में देखो क्या लिखा है. Find the equation of the circle with center. Center is minus 3, minus 3, and it's pointing to the point minus 2,6. Okay, we can consider a figure for this as something like this. There is a beautiful circle, and the center of the circle, let us call it as C. It is equal to minus 3, minus 3. Okay, and this circle is passing through a point minus 3, minus 6. ये point को कुछ भी नाम दे सकते हैं. Let us call it as point P. Now, जो भी फॉर्मूलाज हमने पढ़ा है उसमें हमें क्लियरली पता है that there is one standard form जहां पे center is at origin. मतलब it is not at origin. तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं चलेगा. कौन सा फॉर्म चलेगा? सेंटर रेडियस फॉर्म चलेगा. सेंटर रेडियस फॉर्म के लिए हमें रेडियस भी पता होना चाहिए. इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज नॉट गिवन. Radius is not given. Instead of radius, we are given a point through which the circle is passing. You are very well. This CP is the radius of the circle. जब हम center और any part of the circle join करेंगे तो हमें radius मिलेगा. We know how to find distance CP. Distance CP we will be calculating using distance formula. Distance formula से CP मिला मतलब radius मिला. उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं center radius. That's how we are going to get the equation of this circle. So let's begin. सबसे पहले सेंटर minus 3, minus 3, इसे हम बोलते हैं HK. All right. There is one more point P. ये पॉइंट का नाम हमने दिया है तो हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं let P. Now, what are coordinates? Coordinate minus 3, minus 6. So I'll write minus 3, minus 6. इसे कुछ नाम नहीं देते तो जाने दो. Let us not give it any name. Right. This was minus 3, minus 3. Now, students, as we discussed, सबसे पहले हमें radius चाहिए. So radius is equals to CP. All right. So let's say R is equals to. How to find CP? CP के लिए formula है हमारा under root of. This is by distance formula, right? Difference of x coordinate whole square plus difference of y coordinate whole square. आप कुछ इस तरह से बोलते थे under root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, which is nothing else but difference of x whole square plus difference of y whole square. तो यहाँ पे x coordinates हमने लिख दिया 1 लिख दिया इधर minus 3 minus 3. So this is going to become minus 3 minus of minus 3 plus 3 हो जाएगा plus 3 whole square plus. So I'll write plus
स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट सो करते ना -3 you have -6 सो ये हो जाएगा -3 -6 बराबर ना सो -3 + 6 हो जाएगा ये द होल स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू -2 + 3 0 0 का स्क्वायर भी 0 प्लस 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 we get under root of 9 therefore radius is 3 units now students once we have the radius and the center पता है radius पता है we can apply center radius form so let us apply center radius form say by सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला इज x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. What is h? h is -3, k is also -3. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. So this becomes x minus -3, x plus 3 the whole square plus y minus -3. This becomes y plus 3 the whole square is equal to, and our r is 3, so this becomes 3 का square. All right, we can expand x plus the whole square जैसे हमने लेक्चर 1 में देखा था by using our formula a plus b the whole square. डिविजन फॉर्मूला क्या था? a square plus 2ab plus b square. तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x square plus 6x okay x square plus 6x plus 9 plus y square plus 6y plus 9 is equal to 3 का square 9. Is this clear to all of us? Now यहाँ पे इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, हायर पावर से लोअर पावर में लिखते जाते हैं. तो x स्क्वायर y स्क्वायर पहले, फिर x और y वाले टर्म तो 6x प्लस 6y. नाउ ये और ये दोनों 9 तो कैंसिल हो ही जाएगा, एक 9 बचेगा, सो आई राइट प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Now, कुछ students x plus 3 the whole square plus y plus 3 the whole square is equal to 9. चलेगा, but it is always advisable कि आप आगे भी ठीक है. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट a, b टचिंग द y एक्सिस. ये टचिंग द y एक्सिस एंड टचिंग द x एक्सिस के रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था व्हेन आई वाज डूइंग द रिवीजन पार्ट. तो इसे एक बार फिर से करते हैं, जैसा मैंने तभी भी बोला था, उसके रिलेटेड सम्स आएंगे, वहां पे हम इसे रिवाइज करेंगे. सो प्लीज ऑब्जर्व फर्स्ट. So students, let's say this is our circle which is touching y-axis. Okay, and this is your x-axis. In the sum, it clearly says that the circle is touching the y-axis. तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया जो y-axis को टच कर रहा है. Let us say इसका center is C. So कोऑर्डिनेट जो हमें दिया है वो है a, b. सेंटर का कोऑर्डिनेट इज a, b. नाउ स्टूडेंट, जो हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट वो ये था दैट if the circle is touching the y-axis becomes the tangent, and when I draw
this particular radius which is to the point of contact. बराबर? Let's call this point as point P. Light है. I hope it is visible now. ये है वो radius हमारा. This radius will be perpendicular to the tangent at y-axis at point P. Now, students, हमने discuss किया था that ये जो distance है ना, it is going to be parallel to x. This distance is going to be parallel to x. That is, radius is going to be equal to this distance, which is going to correspond to the x coordinate. यानी कि radius r will be equal to the magnitude of x coordinate. Magnitude इसके लिए बोल रहा हूँ कि radius जो है वो length है. It cannot be negative. In simple words, something like this. Okay. In this case, it will be equal to r will be equal to modulus of a. In this case, r will be equal to modulus of a. I hope this part is clear to all of us. Right. Now, we are having the center and also we are having the radius. And we are having radius. So now, students, let us have a look at the solution. Okay. Center. Let the center be C, A, comma B. Further, सेंटर के लिए हम लोग नॉर्मली नाम लिया करते थे H, K. Now, since the circle is touching y-axis, since circle is touching y-axis, radius will be equal to modulus of x coordinate, which is equal to a. So therefore, radius is equal to positive a. Now, students, again, we are having the center, we are having the radius. Now we'll say by center, radius. For what is the formula? The formula is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Now, h, so what is h? H is equal to a, k is equal to b, and r is equal to a. So let us do the substitution. This becomes x minus a the whole square plus y minus b the whole square is equals to a square. All right. अब quickly यहाँ पे apply करते हैं formula x minus a the whole square. This is of the type of a minus b the whole square. उसका formula क्या था? a square minus 2ab plus b square. So यहाँ पे हो जाएगा x square minus 2 into ab, यानी इन दोनों से multiply होगा. So 2ax plus a square. Same तरीके से यहाँ पे आएगा y square minus 2by, y square minus 2by plus b square is equal to a square. A square यहाँ पे cancelled. So we will be left with x square plus y square minus 2ax minus 2by plus b square is equal to 0. That's our answer. So the most important concept in this particular sum was, since if the circle is touching the y-axis, its radius will be equal to the corresponding x coordinate. And vice versa भी आप मुझे बताओ, if the circle is touching x-axis, if the circle is touching x-axis, then the radius of the circle will be equal to magnitude of y coordinate. All right? अगर यही circle x-axis को touch कर रहा होता, then radius would be equal to
मॉड्यूलस ऑफ बी। यस करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट -2, 3 टचिंग द एक्स एक्सिस। अब ये जो सम है ये है आपका होमवर्क, विच इज योर सेल्फ स्टडी। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है यहाँ पे सेंटर क्या है। सेंटर इज -2, 3, दिस इज योर h, k, and since the circle is touching x-axis, since the circle is touching x-axis, we will say radius is equals to modulus of y coordinate which is equals to modulus of 3. Hence, r is equal to 3 units. Now you will apply center radius form. Radius is equal to 3 units. Now we will apply center radius form. I hope this is clear to us. Sum आपके सामने है. This is your self study homework. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। And as usual, कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो you can always get in touch with me. You can let me know. Next, find the equation of the circle with center on the x-axis and passing through the origin, having radius is equals to 4. ठीक है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो सर्कल है वो कैसे होगा ना। Students, it says for the circle, this circle is having its center on the x-axis, but the circle is passing through the origin. When I say circle is passing through the origin, so simple words, circle is touching your x-axis, y-axis. Center is on the x-axis and passing through the origin. Matlab the circle is going to touch y-axis. Let us say this with the help of figure. This is our x-axis. All right. Now, as we know, the center is on the x-axis. So let us say यहाँ पे कहीं पे center है. Now, we all know very well, since the center lies on the x-axis, उसका ना y coordinate 0 होगा, उसका y coordinate 0 होगा. x क्या होगा वो देखते हैं थोड़ी देर में. Now, the circle is passing through the origin, यानी कि ये जो point है, बराबर, this is origin. This particular point becomes the origin. इसलिए मैंने बोला कि जो y axis होगा वो ऐसे होगा. समझ में आ रहा है? So let me draw the y axis also over here. It's always difficult to get it touching. Okay, मान लो ये point पे touch हो रहा है. Now students, यहाँ पे एक सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है. There might be one question that it is not being clearly told to us that जो center है ना, center वो x axis में है लेकिन right में है कि left में, वो बोला नहीं है. तो this center would have been here also. यहाँ पे होके भी we could have got a circle. यहाँ पे करके भी हमें यही सर्कल मिल सकता था. समझ रहे हैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. तो सेंटर या तो राइट में हो सकता था या तो लेफ्ट में हो सकता था. इन बोथ द केस एक चीज सेम है.
center lies on the x-axis. Now understand, we have been told that the radius of the circle is 4, यानी कि OC जो length है, this is 4, this length is also 4 radius, right? तो अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि सेंटर जो है ना, सेंटर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो since this length is 4, we can say center का coordinate is 4,0. Y coordinate will be 0 since the point lies on x-axis. सेम तरीके से C dash का coordinate क्या होगा? Will it be 4,0? No, it will be minus 4,0 because left side में. All right. So now students, यहाँ पे we have understood one thing, that हमें center का coordinates भी मिल गया है and हमें radius भी मिल गया है. The catch is that यहाँ पे दो possibilities है. There are two possibilities because the center could have been on the right side also or it could have been on the left side also, right? So we'll say solution में radius is equals to r is equals to 4. ठीक है. Center C would be equal to plus or minus 4,0. This is HK. All right. So now we'll say by by center radius form. We'll say by center radius form. Equation of the circle is given by the formula x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Students, if plus or minus है तो पहले एक काम करते, पहले प्लस वाला करते फिर माइनस वाला करते. So it will be x minus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square is equals to r is 4 तो 4 square. और प्लस वाला किया तो कुछ फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ साइन का. अब -4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 आएगा. सो सेकेंड वाले के लिए जो हमारा आंसर होगा, सेकेंड इक्वेशन विल बी x -4 करेंगे मतलब हो जाएगा x plus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 4 square. ये मेरे दो इक्वेशंस बनेंगे. ठीक है. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस होगा ठीक है x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 x प्लस 16 प्लस y माइनस 0 इज y तो y स्क्वायर हो जाएगा. 4 स्क्वायर इज 16. और वाला प्लस ये वाला भी देख लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 8x अगेन कंपेरेबल विद दिस इज अगेन 8 प्लस b द होल स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ यहाँ पे ये 16s will get cancelled. Same way यहाँ पे भी this 16s will get cancelled. So what are we left with? We are left with x square minus 8x, x square plus y square लिखना चाहिए. ठीक है. x square plus y square, x square plus y square minus 8x. That's it. Numbers are not there. Any numbers are not there. Those got cancelled. यहाँ पे भी वैसे ही x square plus y square plus 8x is equals to 0. So I hope this sum was easy for us to understand.
यहाँ पे से बड़ा बात यही था कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, क्यों है, कैसे है, हमारे सामने है। ठीक, साथ में लिख सकते हैं, वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8x इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, लेट अस चेक आवर नेक्स्ट सम। All right, let us have a look at our next sum. It says, find the equation of a circle if the equations of the two diameters are given to us. 2x plus y equal to 6 and 3x plus 2y equal to 4. When the radius of the circle is 9. Now, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आता है that radius is 9. The only problem is center. अगर सेंटर मिल जाए तो बात बन जाए, हम लोग क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट सेंटर ओवर हियर? We are given the two diameters, correct? Students understand, for a circle, okay, let's say this is that beautiful circle. Now let me draw the two diameters. Let's say this is the first diameter. Okay. And we have one more diameter. तो उसके लिए ऐसा ड्रॉ कर दें। Students, when we draw the two diameters, their point of intersection is nothing else but it is the center. This point is the center of circle. So now we wish to find the coordinates of this point. So how are you going to get it? ये जो दोनों जो लाइंस हैं, जो डायमीटर्स है, उसके इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ये दूसरा वाला लिखा था मैंने, तो लिख देता हूं यहाँ पे 3x plus 2y is equal to 4, ठीक है, and this one out here, this is 2x plus y is equal to 6. So we are going to solve these two equations simultaneously. Let me write the first one once again. 2x plus y is equal to 6. 3x plus 2y is equal to 4. This is your first equation. This is your second equation. Now students, to solve this, let us multiply the first one with 2, because अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे यही बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, तो इसको ना मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सो द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 4x plus 2y plus is equals to 12. Second equation will remain as it is. 3x plus 2y is equal to 4. Now we are not going to add away, we are going to do subtraction. So for subtraction, सभी का साइन अपोजिट हो जाएगा, ये दो कैंसिल। 4x minus 3x is x. 12 minus 4 is 8. तो हमें x कोऑर्डिनेट यानी कि x मिल गया 8. अब for y we will substitute x equal to 8 in 1. Substitute x equal to 8 in equation 1, we get 2 into 8. जहां पे x है वहां पे 8 आएगा. 2 into 8 plus y. 2 into 8 plus y.
is equals to 6. So let us solve this. 2 8s are 16. Okay. This is 16 plus y is equal to 6. Therefore, y is equal to 6 minus 16. X is 8, y is minus 10. Therefore, we say center of the circle is 8, minus 10. 8, minus 10, right? और इसको हम लोग नाम देते हैं h, k. Radius of the circle is 9 units. अब हमें करना है by center रेडियस फॉर्म. तो सेंटर रेडियस फॉर्म के बाद का जो वाला पार्ट है वो रहेगा आपका केस स्टडी. तो ये आप लोगों को करना है. सो अब तो हम ये कर ही सकते हैं, खाली यहाँ पे मेथड यही सीखना था कि यार सेंटर लाना कैसे है. तो ये भी काफी इजी सी बात थी हमारे लिए. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू अस. Here's this sum. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Let us have a look at our next sum. Find the equation of a circle with radius 4 units and touching both the coordinate axes, having center in the third quadrant. Students, 6.1 sum number 6, it says find the equation of a circle with radius 4 touching both the coordinate axes, having center in the third quadrant. ये वाला बात भी हमने सीखा था. कोई सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे तो क्या होता है, रेडियस हमें पता है. वाई एक्सिस को टच करे तो क्या होता है, हमें पता है. जब दोनों को टच करेगा तो क्या होता है, वही होता है. Easy. If the circle is touching x axis, then what is the radius? Radius is equal to modulus of y coordinate. If the circle is touching the y axis, y को टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट, x को टच कर रहा है तो मॉड्यूलस ऑफ y कोऑर्डिनेट, दोनों को टच कर रहा है तो कोई भी ले लो, रेडियस मिल जाएगा. सो नाउ our circle is something like this. It is in the third quadrant and touching x axis and y axis. Here is the center. Now students, understand. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बराबर. This length is 4. This length is also 4. अगर इसको C बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं. रेडियस इज 4. तो कोई बताएगा ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. यहाँ पे जो डिस्टेंस है दिस विल बी -4. सॉरी, डिस्टेंस विल बी 4, कोऑर्डिनेट विल बी -4. This will be parallel to this over here, but because it is in third quadrant, or you can say this is the left side of the x-axis, ये वाला जो है कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -4 होगा. एंड वैसे ही this length will correspond to this. उसके अकॉर्डिंगली जो C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4, -4. Now students, this sum is opened up for us because यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही लिखना है that since the circle is touching both the axes and it is in the third quadrant,
with radius 4, C का coordinate is -4 -4 because radius is equals to 4. अब इसके बाद आएगा by center radius form. बराबर, ये तो हम से करते ही आ रहे हैं. सेंटर मिला, रेडियस मिला, तो हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. r यहां पे है, r is over there. Is it clear? Easy. Next sum देखते हैं. Everybody, let us have a look at our next sum. What is question number 8? Find the equation of a circle passing through the points 1, -4 and 5, 2 and having its center on the line x minus 2y plus 9 is equal to 0. So students, here we are having a circle passing through 2 points 1, -4 and 5, 2, 1, -4 and 5, 2 and having its center on a line. तो सबसे पहले ना इसका फिगर समझते हैं. That is, there is a beautiful circle which is passing through the points. That is, this is the first point. इसको नाम देते हैं A, इसको बोलते हैं B. So इसको A बोलते हैं. A is 1, -4 and B is 5, 2. ठीक है. उसके अलावा हमें बोला गया है that there is a line. उसके अलावा हमें बोला गया है that there is a line x minus 2y plus 9 equal to 0. The center of the circle lies on the line. So let me draw that line. The equation of the line is x minus 2y plus 9 is equal to 0 and there is a center which is on the line. Normally center का coordinate हम h, k लेते हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पे. ठीक है, h, k. So now students, our job is to find what? Find the equation of the circle. And you know very well, to find the equation of a circle, हम क्या करते हैं? We just need the center. We just need the center and the radius. Now, अगर center मिलेगा तो radius भी मिल जाएगा. Because CA और CB को join करो. या तो CA से radius निकालो या तो CB से निकालो. So let me do that. ठीक है. Okay. So students, what can we say about length CA and CB? What can we say about length CA and CB? CA, CB, they both are equal because they are both are radii of the same circle. CA is equal to CB. CA is equal to CB. The reason is radii of the same circle. Now, students, we can find CA by applying distance formula. We can find CA by applying distance formula. तो CA के लिए हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब क्या होगा?
h minus 1 the whole square plus difference of y coordinate मतलब k minus -4 that becomes k plus 4 the whole square is equals to cv के लिए once again under the root of difference of x coordinate मतलब h minus 5 difference of y coordinate k minus 2. All right, next one over here we'll say squaring both sides. We'll say squaring both the sides. ये हो जाएगा h minus 1 the whole square plus k plus 4 the whole square is equal to h minus 5 the whole square plus k minus 2 the whole square. All right, bracket open करते हैं. This is h square minus 2h plus 1 plus k square plus 8k plus 16 is equal to h square minus 10h plus 25 plus k square minus 4k plus 4. Is this clear? H squares will get cancelled, k squares will get cancelled. So what are we left with? Like terms को एक साइड मिलता है, पहले h वाले terms. Now h में यहाँ पे -2h है, यहाँ पे है 10h. 10h will come on the left hand side. We get 10h. It will become positive. 10h minus 2h अपनी जगह पे है. Next k वाले terms. 8k over here and minus 4k over here. Minus 4k यहाँ पे आएगा plus 4k. So this gives us 8k plus 4k, right? Is equal to. अभी सारे के सारे नंबर्स को ना मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें +1 plus 16, this becomes 17. यहाँ पे है 25 plus 4. 25 plus 4 is 29 and this 16 plus 1 is 17 और राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा 29 minus 17. 10h minus 2h 8h plus 8k plus 4k 12k is equals to 29 minus 17 will give us 12. Right? Now ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हर एक जो टर्म है वो है मल्टीपल ऑफ 2. सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, डिवाइडिंग बाय 2 और रादर 4 इज अ बेटर बिकॉज सारे 4 के मल्टीपल्स है, तो उसे 4 कर देते हैं. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, ठीक है. सो दिस विल बिकम 2h प्लस 3k is equal to 3. Dividing throughout by 4. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 3s are 12. 2h plus 3k, right, is equal to 3. This is our first equation. Students, अगर आप ध्यान से देखो, one equation is already given to us, right? Now, h comma k lies on the line. When a point lies on the line, it satisfies the equation of the line. So now I'll say over here, we'll say C क्या हो गया? C okay. Okay, C h comma k
lies on the given line. What is the line? X minus 2y plus 9 is equal to 0. तो स्टूडेंट मैंने पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि इट्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि हम वो पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है सी एच कॉमा के, इसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहां पे एक्स है वहां पे आएगा एच माइनस 2, जहां पे है y वहां पे आएगा k माइनस 2 के प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जो प्लस 9 है ना, उसको हम लोग राइट में लेके जाते हैं, प्लस 9 को ना राइट में लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम इज इक्वल टू माइनस 9। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये दिख रही है, इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। Once we solve them simultaneously, we will find h k, h भी मिलेगा, k भी मिलेगा by solving these two equations simultaneously, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। And once you get this h k, उसके बाद रेडियस, रेडियस कैसे मिलेगा? by applying distance formula, रेडियस इज इक्वल टू सी ए, रेडियस इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे this will be found by this will be calculated by distance formula. All right, so center मिल गया, radius मिल गया, now we will apply center radius form, now we will apply center radius form। सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो वो तो हमें आता ही है। तो स्टूडेंट्स, हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज गेटिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमने कैसे किया? रेडियन ऑफ द सेम सर्कल से। दूसरा इक्वेशन कैसे किया? द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इट्स कोऑर्डिनेट satisfies the equation of the line। Okay, simple, whenever the point lies on the line, वो पॉइंट को हम लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो now we will solve these two equations simultaneously। simultaneously solve करने से h और k मिलेगा, ये पार्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। h और k मिलने के बाद रेडियस कैसे मिलेगा? भाई रेडियस इज इक्वल टू सी ए, सी बी ही ले सकते, कोई भी एक ही कैलकुलेट करो। सी ए डिस्टेंस फार्मूला से काफी बार हमने इस सेशन में डिस्कस किया डिस्टेंस फार्मूला। वंस यू गेट रेडियस, नाउ वी कैन गेट द फाइनल आंसर बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। सो आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ अस।